Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of SuperGrads by Top Rankers, or especially the SuperGrads CAT. And I'm here to discuss a very important topic, which is for your CMAT, upcoming CMAT examination. The topic name is 3D mensuration. 3D mensuration questions are generally asked in CMAT, and I'm going to teach you the complete theory part of it, and we'll discuss some of the important problems as well. So just do one thing, please do. Uh, Share the session as well with your friends as well. Okay, let's see what are we going to cover. What are we going to cover in 3D mensuration topic? So let's see the important figures first कि क्या क्या करना है हमको. What are the topics we need to cover? So majorly 3D figures which are being asked in the examinations are, you can say, cuboid, cube, then comes cylinder, then cone, sphere, and hemisphere. So majorly we will be knowing all the formulas associated with them, and we will try to develop a problem solving skill of these questions as well. So let's see one by one. Let's see one by one. First, I am picking up the figure name as cuboid. It's a box-like figure or a room-like figure having length, breadth and height. एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है या फिर रूम टाइप स्ट्रक्चर है हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. A room like structure having length, breadth and height. What are the things which can be asked from here कि इसका वॉल्यूम क्या होगा? So volume is L into B into H. Length cross breadth cross height. Then comes the total surface area, TSA. Total surface area. Complete surface area. Actually, this figure is having 6 faces. इसके 6 faces हैं. This is one of the face. This is one of the face. I hope you can visualize these faces, है ना? कि 6 faces कैसे कैसे हैं? सामने वाला, पीछे वाला, side वाला, ये वाला. So there are top and bottom. So what is the total surface area of these 6 faces? It is twice of length into breadth plus breadth into height plus height into length. They can also ask you lateral surface area. They can also ask you lateral surface area. लेटरल के लिए फ्लोर को और टॉप को आपको हटाना होगा. For example, when I ask the lateral surface area of the room in which I am standing, so these all 4 walls are covered in it. ये चारों walls का area would be considered as a lateral surface area. I have to eliminate the ceiling and I have to eliminate the bottom as well. तो ये दोनों portions को हटाना है. What is this floor? Length into breadth. Top also length into breadth. तो L into B वाले दोनों elements चले जाएंगे. What will remain? BH plus HL. So twice of L plus B into H. Twice of L plus B into H is your lateral surface area. Area of 4 walls भी जब पूछा जाएगा तो आप यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं. एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब पूछा जाएगा तब भी आप यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं. ट्वाइस ऑफ L plus B into H. The longest diagonal of the cuboid. Longest diagonal of cuboid. Longest diagonal of cuboid. देखो जरा. This act as the longest diagonal of the cuboid. ये होती है भाई सबसे लंबी diagonal of the cuboid. What is its value? Under root of L square plus B square plus H square. So these 4 things you should be knowing about the cuboid if you want to crack the question. What are those? Volume of cuboid, length into breadth into height, total surface area, twice of LB plus BH plus HL,
symmetric equation like following a pattern. Third, lateral surface area, which is twice of LH plus BH or twice of L plus B into H. Then comes the diagonal, the longest diagonal, because और भी diagonals हैं, ये body diagonals भी हैं. So generally they will ask you the longest diagonal. तो longest diagonal under root of L square plus B square plus H square and so on. पहले दो फिगर में कंप्लीट करा दूंगा, then we will do the questions based on this. Cube is exactly the same as cuboid. Cube is exactly the same as cuboid. Only thing is कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के तीनों इक्वल हो गए. यहां एल बी एच था, यहां पर क्या हो जाएगा ए ए ए. All the length, breadth, height are equal to each other and they are a a a. एक बार सारे फॉर्मूले लिखो. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता था? L इंटू बी इंटू एच. तो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? A इंटू ए इंटू ए क्यूब. साइड क्यूब, what it is? Side cube, side cube. What is the total surface area? 2 times of LB plus BH plus HL. Now, in the cube, each and every side is A. क्यूब में हर एक साइड A है, तो हर एक साइड अगर A है तो इट इज A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 6A स्क्वायर. गॉट माई पॉइंट? तो अब आपको पता रहना चाहिए व्हाट की टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6A स्क्वायर. Total surface area of a cube is 6A square. Okay. What was the lateral surface area जो हमने पढ़ा था? इसको हम कर्व्ड भी कह सकते हैं जब कर्व वाले फिगर आ जाएंगे. डोंट गेट कंफ्यूज, है ना. जब फिगर सर्कुलर होगा तो हम लेटरल को कर्व्ड भी कह सकते हैं. इट इज ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H. इन क्यूब ईच एंड एवरी साइड इज A. In cube, each and every side is A. 2A into A, 4A, A square. 4A square. Each and every side is A, so 4A square. एक बात और बच गई और वो है डायगोनल, है ना. सो डायगोनल भी देख लेते हैं. डायगोनल क्या था? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो यहां पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, एंड अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर इज एज गुड एज A रूट 3. द लॉन्गेस्ट डायगोनल. द लॉन्गेस्ट डायगोनल. What it is? The longest diagonal. So diagonal is going to be A root 3 to take cone and so on. ठीक है. कुछ क्यूब और क्यूबॉइड क्वेश्चंस ले लेते हैं. Then we are going to move on to the cone and cylinder. Okay, this is looking a cool. कि दो क्यूब हैं, each of side 10 centimeter are joined to form a single cuboid. Two cubes, each of side 10 centimeter are joined to form a single cuboid. What is the surface area of the new cuboid so formed? सिर्फ सरफेस एरिया लिखा गया है तो वी विल कंसिडर इट एज अ टोटल सरफेस एरिया ओनली. ठीक है. अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा गया है तो वी विल कंसिडर इट एज टोटल सरफेस एरिया ओनली. दो क्यूब को मिला के एक क्यूबॉइड बना रहे हैं. 3D विजुअलाइजेशन में आपको देने की कोशिश करता हूं. हाउएवर आपको समझना पड़ेगा कि हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. एक क्यूब ये रखा है, दिस इज वन ऑफ द क्यूब. उसी के बगल में एक और ऐसे करके रखा हुआ है. ठीक है. थोड़ा सा ओके, समथिंग लाइक दिस. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, ऐसे करके कुछ. दो क्यूब एडजेसेंट रखे होने की वजह से
व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड कि ये एक क्यूबॉइड बन गया है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्यूबॉइड। देखो इसकी साइड ये 10 थी और ये भी 10 इसमें मर्ज हो गई, तो बेसिकली हमारी क्यूबॉइड की लेंथ हो गई 20। हमारी क्यूबॉइड की लेंथ हो गई 20। हमारे क्यूबॉइड की लेंथ हो गई 20। बताओ भाई व्हाट इज द, व्हाट डू यू से, ब्रेथ। अभी भी ब्रेथ 10 ही है। आई होप यू कैन विजुलाइज दिस। दो क्यूब को ऐसे अलोंग द लेंथ रखा गया है, उनकी ब्रेथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देयर ब्रेथ इज स्टिल 10। माचिस के डब्बे जोड़ते थे ना, सिर्फ लेंथ बढ़ती थी, ब्रेथ अभी भी वही है 10। हाइट, हाइट इज स्टिल 10। हाइट इज स्टिल 10। तो सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हुआ है, लेंथ हैज बिकम 20, ब्रेथ इज 10, हाइट इज 10। द टोटल सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 20 into 10 200, 10 into 10 100, h into l 200, 500 into 2000 centimeter square is the answer. 1000 centimeter square is the answer. So what is the learning from here? The learning from here is it is सिर्फ लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, ओनली द लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, द ब्रेथ पार्ट, वो माचिस के डब्बे, breadth is going to remain same and the height is also going to remain same when you are keeping them adjacent to each other, when you're keeping them adjacent to each other. Okay, one more concept from here. सिर्फ क्यूब का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है कि तीन मेटल क्यूब्स ऑफ लेंथ 3 4 5 आर मेल्टेड to form a single cube. What is the age length of that cube? तीन डिस्टिंक्ट क्यूब्स को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है। What is the side of that cube? तीन अलग अलग क्यूब को मेल्ट करके यू आर फॉर्मिंग अ क्यूब। What is the side of that cube? So when you melt and form a new figure, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। What is the volume of a cube? A cube. I've already taught you कि volume of a cube is a cube. तो पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम रहा होगा 3 क्यूब, सेकंड वाले का 4 क्यूब और थर्ड वाले का 5 क्यूब। सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम इनिशियली। दिस इज द टोटल वॉल्यूम इनिशियली। इतना वॉल्यूम पहले है। लेट सपोज यू आर फॉर्मिंग अ क्यूब ऑफ द साइड ए आउट ऑफ इट, सो इट शुड बी इक्वल टू ए क्यूब। अगर आप इसका पिक्चराइजेशन देखना चाहते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि तीन क्यूब थे, साइड 3 4 and 5, you have melted them and form a new cube of side A. So their volume should remain constant. So 3 cube plus 4 cube plus 5 cube should be equal to A cube. 27 plus 64 plus 125 is A cube. When you add it, it will become 216 is equal to A cube, जो कि 6 का क्यूब है, which implies A is equal to 6. क्या बताता है ये? A is equal to 6. So 3 4 5 के तीन अलग अलग क्यूब को मेल्ट करने के बाद जो आपके पास अवेलेबल वॉल्यूम है वो है 216, और इस वॉल्यूम से आप एक नया क्यूब बनाना चाहते हैं एंड हुज साइड इज A, so that A is coming in 6 centimeter. Is it clear to you guys? Come on to tell me. So whenever you're melting, make the cube constant. Make the cube constant. Let's move on. What is the length of the longest diagonal that can be placed in a room of dimensions 15, 12, 9? एक रूम है जिसकी लेंथ इज 15, ब्रेथ इज 12 एंड हाइट इज 9। जनरली स्टैंडर्ड में एल बी एच ही लिखते हैं। हाउएवर हमारे लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द
लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल, जो आप ऑलरेडी जानते हैं व्हाट इट इज, क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. The length of the longest diagonal is under root of L square plus B square plus H square. L is 15 का स्क्वायर, B is 12 का स्क्वायर, H is 9 का स्क्वायर. अगर आपने थोड़ा सा ट्रिपलेट पढ़ा है ना, तो व्हाट इज 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर? व्हाट इज 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर? मतलब ऑब्वियसली नॉट इन फॉर्म ऑफ एक्चुअल वैल्यू. आई वांट डायरेक्टली समथिंग का स्क्वायर. दिस इज 15 का स्क्वायर. From where we got to know it? कैसे पता चला? Sir, 3, 9, 12 and 15 will form a triplet of 3, 4, 5. 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15. 2 times of 15 is square. Anything is square outside the square root will come as 15 and root 2 will remain inside. Answer. Anything outside square, अगर कोई अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर कैसे आएगा? पूरा बन के आएगा रूट 2. लेट्स मूव ऑन फर्दर. चलो. So let's do some theory for cylinder and cone. Make the next heading cylinder and cone. Make the next headings cylinder and cone. A figure like this, bottle-like structure, or you can say the gas cylinder and all. Okay, you've seen a lot of cylinders back home. What are the key elements? इसका base circular होता है, radius is r, height is h. The base is circular. Yeah, we are reading a circular cylinders where the base is a circle of radius r and height is h. The volume is pi r square h. If I want to give you the element की ये कहाँ से आया है, pi r square is the area of the circle. So area of the base into height. Area of the base into height is from where the volume has come up. फिर आ जाता है, पहले लेट इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया पहले करते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया, perimeter of the base into height. What is the perimeter of the base? 2 pi r. So 2 pi r into h, 2 pi r h. Total surface area. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में अभी तक कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने सिर्फ ये वाला एरिया देखा है, which is going on in a circle. I have not considered the base and not the top as well. जो सर्कुलर बेस और जो सर्कुलर टॉप है उसको अभी तक कंसीडर नहीं किया गया था कर्व्ड सरफेस एरिया में. सो इफ आई वांट टू कंसीडर दैट एज वेल, तो नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल ऐड हो जाएंगे. So it will become 2 pi RH plus pi r square 2 times. On solving, it will become 2 pi r h plus r. On solving, it will become 2 pi r h plus r. So what is the total surface area? 2 pi r r plus h of the cylinder. क्या होगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया? 2 pi r r plus h. What is the curved surface area? 2 pi r h. What is the volume? Pi r square h. याद हो जाना चाहिए भाई क्लास से जाते ही. वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच, टोटल 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर. ठीक, परफेक्ट. नाउ कम्स द कोन. बर्थडे कैप, और
conical ice cream cones, birthday cap, conical ice creams, and a number of other examples. This is called as slant height. This is called as slant height, and they maintain a relation of Pythagoras, that is r square plus h square is equal to l square. Radius, height, and slant height maintain a Pythagoras relation, that is l square is equal to h square plus r square. What is the volume of it? The volume of it is, and what else? Curved surface area, then total surface area. ओके आई वाज थिंकिंग जस्ट बिकॉज मैं उसको उसका डेरिवेशन आपको करना चाह रहा था कि दिस इज वन थर्ड ऑफ इट, है ना? ये कितना होता है? वन थर्ड ऑफ इट. सो इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. Since the volume of the cylinder was pi r square h, so volume of the cone is one third of it, 1/3 pi r square into h. Curved surface area, कर्व्ड सरफेस एरिया आप डायरेक्ट याद रखेंगे पाई आर एल. हाउएवर ऐसा नहीं है कि हम इसे ड्राइव नहीं कर सकते, बट आवर मोटिव इज टू रिमेंबर इट एंड अप्लाई इट. व्हाट इज आवर मोटिव? टू रिमेंबर इट एंड अप्लाई इट. पाई आर एल. सो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? कर्व्ड में ये पूरा वाला आ गया, कर्व में ये वाला आ गया पूरा. सो टोटल में वो जो एक सर्कल बचा हुआ है नीचे, दैट इज वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा. टोटल में जो एक नीचे सर्कल बच गया है, दिस बेस सर्कल, इसको ऐड करना पड़ेगा. सो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर. सो क्विकली रिवाइज. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एंड हेयर पाई आर एल. Total surface area 2 pi r plus h, and there pi r l plus r. एक सिमिलैरिटी सी फील तो होती है. एक दो बार जैसे ही आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, यू विल बिकम कंफर्टेबल विथ इट. चलो एक दो अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट्स सी देम. The ratio of curved surface area and total surface area of a cylinder is given. If the curved surface area is this, what is the height of the cylinder? The ratio of curved surface area and total surface area of a cylinder is known, and the curved surface area is given to you. What is the height of the cylinder? क्या होगी height of the cylinder? बताओ जरा. सर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच. सो हाइट अपॉन हाइट प्लस रेडियस would be in the ratio 4:5. दिस मीन्स कि अगर हाइट 4k होगा तो रेडियस k होगा. क्यों? Why? हाइट इज 4k and h plus r is 5k. h ऑलरेडी 4k है, तो फिर r is k. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखी है. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया देना मतलब 2 पाई, व्हाट इज r k, व्हाट इज h 4k is 1 2 3 2. Go off, finish. 2 6 1 6 11 8. So k square is equal to 7 cross 7. K is 7. No matter whatever they ask you, you can answer it quickly. No matter whatever they ask you, you can answer it quickly. What is the height of the cylinder? Height of the cylinder is 4k.
and we have find out the value of k as 7, 4 7 ja 28. What is the height of the cylinder? Height of the cylinder is 4k, 4 into 7, 4 7 ja 28. Over and out. Let's move on. Come on. Sum of radius and height of cylinder is given. Total surface area of cylinder is also given. What is the volume of the cylinder? Sum of radius and height of cylinder is given. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बताया गया है और आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है. पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीपल ऑफ 11 होगा. पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीपल ऑफ 11 होगा. क्यों होगा सर? पाई आता है. पाई आने का मतलब सर 22 आता है. 22 आने का मतलब सर 11 आता है. 11 तो नीचे किसी से सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो 11 का मल्टीपल. तो काफी अगर आप लकी हुए तो सिर्फ और सिर्फ 11 का मल्टीपल देखने से ही काम चल जाएगा. सिर्फ और सिर्फ 11 का मल्टीपल देखने से ही काम चल जाएगा. देखते हैं. 4 माइनस 5 माइनस 1 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11. 13 10 माइनस 10 मल्टीपल ऑफ 11. 13 माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 11. दो ऑप्शन क्लैश कर गए भाई. 11 माइनस 3 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11. ये दो ऑप्शंस प्रॉब्लम कर गए. अदरवाइज यू कुड हैव डायरेक्टली मार्क द आंसर. तो काफी अच्छे चांसेस हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ऑप्शन क्लैश ना करें, सिर्फ एक ही मल्टीपल ऑफ 11 आए. बट सिंस आई वांट टू सॉल्व इट, मैं कोई जादू नहीं करना चाहता था, आई वांट टू सॉल्व इट सो दैट यू विल नो द प्रोसेस एज वेल, सो आई हैव केप्ट टू ऑप्शंस. इजंट इट? चलो. लेकिन एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एक ही मल्टीपल ऑफ 11 हो. आर प्लस एच 18 देना और साथ में टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर. आर प्लस एच को 792 बताना. आर प्लस एच की डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन कर देते हैं. आर प्लस एच की डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन कर देते हैं. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर. 11 2 जा 11 7 जा 77 2. 18 4 जा 72. 4 4 gone. Radius is 7. Radius is 7. What is the radius? 7. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछा गया है. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछा गया है. रेडियस 7 होने का मतलब हाइट इज हाउ मच? 11. रेडियस 7 होने का मतलब है हाइट कितनी है? 11. व्हाट दे आर आस्किंग? वॉल्यूम. पाई आर स्क्वायर एच. 22 by 7. Radius is 7 cross 7. Height is 11. 22 into 7 is 154. So unit digit of 4. And 1694. 1694 is the correct answer. What is the correct answer? 1694 is the correct answer. Great. So such questions are expected from cylinder as well. तो दो क्वेश्चन सिलेंडर के ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए. प्लीज डू रिवाइज देम वंस. एक तो ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया गया है. h अपॉन h प्लस r आ गया. तो इफ हाइट इज 4k, क्योंकि एक वेरिएबल तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, देन h प्लस r इज 5k और यहां से आपको r की वैल्यू k आ जाती है. एंड जस्ट पुटिंग इन द गिवन इंफॉर्मेशन में इसकी वैल्यू पुट करके k आ जाएगा और k आते ही सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी. रेडियस और हाइट का सम दिया गया है हेयर.
और 2 पाई r plus h मीन्स टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू बताना is giving you an 11 का मल्टीपल was a good thing which you can know, है ना? एग्जाम में जरूर काम करेगा. My purpose was to solve it completely as well. That is why I have kept intentionally two options, not a one. Because if I would have kept the one only, then you would not be able to see the solution of that one. Sphere, cube, cone कर लेते हैं पहले. Finished cylinder and cone completely before moving on to sphere and hemisphere. Before moving on to sphere and hemisphere, एक बार आप ये मुझे कोन वाले क्वेश्चंस और बता दो. Slant height of the cone is 13. Height is 5. Right angle triangle. 5 और 13 को देखकर किसकी याद आती है? 12. Why? 5, 12, 13 is a triplet. 5, 12, 13 are the three sides of the right angle triangle, where 13 is necessarily the hypotenuse. Where 13 is necessarily the hypotenuse, 5 and 12 can be either perpendicular or base. Area of the curved surface कितना बताया था आपको? पाई आर एल बताया था. 22/7, 12, 13. 12 into 13 is a famous multiplication which we do generally. I think it is 156. 7 2 ja 14. 7 2 ja 14.20 20, something like this. तो 22 के स्क्वायर से बड़ा आंसर है. इट्स अ ग्रेटर आंसर देन 22 का स्क्वायर. तो 484 से बड़ा है. 22 के स्क्वायर से बड़ा आंसर है. 22 का स्क्वायर इज 484. तो आंसर शुड बी लार्जर देन 484. No other option is there in the market. So we have just marked 490. Next. Come on. कोन के ऊपर एक और अच्छा प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आप सभी के लिए. अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द 1.5 मीटर वाइड मेटल सीट. एक मेटल सीट है 1.25 मीटर वाइड. आप उसे कॉनिकल मशीन बनाना चाहते हो जिसकी रेडियस 4 है और हाइट 24 है. इसकी रेडियस 7 है और हाइट 24 है. तो फिर स्लैंट हाइट कितनी होगी? 25. You want to make this conical sheet. You want to make this conical sheet from a rectangular sheet. अच्छा, तो जैसे अगर मैं आपको विजुलाइज कर रहा हूं तो मतलब आप ऐसे करके उसे कुछ घुमा रहे हो, है ना, रेक्टेंगुलर शीट को. यू आर मेकिंग इट इन अ पर्टिकुलर मैनर. यू आर जस्ट ड्रॉइंग इट इन अ पर्टिकुलर मैनर टू मेक दिस हैपन. तो बेसिकली जो भी डायमेंशंस होंगे लेंथ इनटू ब्रेथ उसका, वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया के. सर बेस में नहीं आएगा क्या वो? नहीं. We are making the surface out of it. We are making the figure out of it. So 22/7, radius of 7, slant height of 25. 22 into 25. और इसकी लेंथ कितनी है? 1.25. तो ब्रेथ कितनी होनी चाहिए पता चल जाएगा. Divide by 100. It is 5 times. It is 20 times. So breadth should be 440. 440. Got it. Let's move on. This is थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे अभी कराता हूं मैं. After this, let's learn two more figures.
And what are those two? Let's learn two more figures. And what are those two? Is a sphere and hemisphere. Sphere and hemisphere. After these two figures, we would have read total of six figures, है ना? कहाँ से start किया था? Cuboid से, then we have moved on to cube, then cylinder, then cone, and finally we have come up to sphere and hemisphere. Earth is a sphere. Cricket ball is a sphere. So how does they look like? Obviously, we use a lot of spheres during our day-to-day life. Whether you talk about something, uh, a kind of hard ball and something, hollow spheres are also there, and solid spheres are also there. First, we are reading the solid sphere. So, what is the volume of the solid sphere? 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. A good thing here कि total surface area and curved surface area both are same. Can someone tell me the logic why? क्योंकि सर पूरा का पूरा कर्व ही है. There is no flat surface unless we cut it. So the curved surface area and the total surface area is same, and the value is 4 pi r square. 4 pi r square. Now, if I cut this sphere, then there is a formation of a flat surface. अगर मैं इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, if I cut this sphere into two equal parts, now there is a formation of a flat surface. बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? सर as you said, hemisphere is half of the sphere, so इसका half कर देते हैं 2 by 3 pi r cube. What about total and what about curved surface area? सर यहां पर आपने बताया था कि जो टोटल है वही कर्व्ड है, तो बेसिकली इसको सरफेस एरिया करके डिनोट किया जाएगा, सरफेस एरिया. तो जब टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फेयर में ये जो कर्व्ड वाला पोर्शन है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला पोर्शन. लेकिन टोटल के लिए एक एडिशनल सर्कल और आ गया है पाई आर स्क्वायर का, बिकॉज ये जो फ्लैट सरफेस क्रिएट हुआ है ना काटने के बाद जो ये फ्लैट सरफेस क्रिएट हुआ है, उससे नीचे एक सर्कल आ गया है पाई आर स्क्वायर का, है ना? काटने के बाद एक सर्कल आ गया है पाई आर स्क्वायर का, तो टोटल में इस पाई आर स्क्वायर को भी ऐड करना पड़ेगा. सो कर्व्ड सरफेस एरिया में प्लस पाई आर स्क्वायर को और ऐड करना पड़ेगा. इट विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर. गॉट इट? कर्व्ड में 2 पाई आर स्क्वायर और आप कहेंगे एक सर्कुलर जो नीचे फेस आया है पाई आर स्क्वायर का, इसको ऐड करने के बाद इट विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर. सो वी हैव कंप्लीटेड द सिक्स फिगर्स. लेट्स सी what are the questions which are from here. All the very best. If you want to have a look once more, this is fair. This is where from we have started. Everything about cuboid, the comparison of cuboid and cube. Cuboid sides were LBH, cube every side is AAA. So there is no distinction between cuboid and cube, only that cube is a special type of cuboid where all sides are equal. Where cube is a special side of cuboid where all sides are equal. Nothing else. So if you don't even remember the formulas, you can make it by yourself. Then we have come to cylinder and cone. Volume pi r square h, they are 1 by 3 pi r square h. Here, the curved surface area 2 pi r h, here that is pi r l. Here it is 2 pi r plus h, here that is pi r l plus r. Lot of similarity.
Sphere and hemisphere, 4 by 3 pi r cube and 4 pi r square. Total surface area, curved surface area, both are same and generally called as surface area because there is no flat surface. Everything in a outside visible is a curved surface only. So it is 4 pi r square. Whereas in a hemisphere, when you cut the sphere into two equal parts, there is a formation of a flat circle in the base. So 2 pi r square, half of it, 4 pi का half, 2 pi plus एक वो pi और ऐड हो जाना, 3 pi r square. We have cracked all these. सब ये तो बहुत ही सिली क्वेश्चन है कि दो स्फेयर्स की रेडियस पता है, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा. Volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi is a constant. The volume is directly proportional to r cube. Volume is directly proportional to r cube because 4 by 3 pi is a constant. So if radius is r, r1, r2 is in the ratio 4:7, then volume would be in the ratio r1 का cube ratio r2 का cube 64:343. 64:343. है ना, बहुत सिली सा क्वेश्चन है. Because for a sphere, volume is 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi is a constant. So volume is directly proportional to r cube. So if r is in the ratio 4:7, then volume is in the ratio 4 cube ratio 7 cube. That is 64:343. Let's move on to the next one. Volume of a cube and a sphere is given. What is the ratio of side of a cube and the radius of the sphere? क्यूब और स्फेयर का आपस में कुछ बात की गई है. एक बार सबसे पहले अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लो क्यूब की और स्फेयर की. ऐसा ना हो कि आप इनके फॉर्मूले ही याद ना कर पाए या फिर वो पिक्चर आपके दिमाग में ना आए. क्यूब की जगह स्फेयर डाल दो, स्फेयर की जगह क्यूब डाल दो. तो जस्ट रिकॉल व्हाट वाज क्यूब. क्यूब वही था, ऑल थ्री साइड्स इक्वल, एंड स्फेयर दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर. Sphere is that ball-like structure. Volume of the cube. Just remember what was cube? ये वाला figure. So what is its volume? A cube. Sphere, ये वाला figure, sir. This. What is its volume? 4 by 3 pi r cube. So a cube upon 4 by 3 pi r cube is given as 6 by pi. 3 को ऊपर भेज दिया. 3 को ऊपर भेज दिया. 3 a cube by 4 pi r cube. पाई से पाई गया. 3 2 जा 6. So a cube is 8 r cube. A cube is 2r का whole cube. So a is equal to 2r. The side of the cube should be equal to double the radius of the cube. Side of the cube should be double the radius of the sphere. Sorry. Side of the cube should be double the radius of the sphere. Side of the cube और radius of the sphere का ratio पूछा है. A is 2r. Okay. So just remember the cube, a special version of cuboid, all three sides equal, a cube. Remember the sphere, that ball-like structure, earth-like structure, 4 by 3 pi r cube. Their volumes ka ratio is given. We have equated it and find out the relation between A and R, where A is the side of the cube and R is the radius of the sphere. Next. Yeah. A solid cube with volume of 1324 is cut into 8 cubes of same volume.
एक क्यूब से क्यूब कट कर रहे हैं भाई. We are cutting a cube from a cube only. अरे अनुराग, गुड यार, गुड. Okay. A solid cube with a volume of 13824 cut into 8 cubes of same volume. The ratio of the surface area of the original cube to that of the surface area of the smaller cubes would be a solid cube with a volume of 13824. बड़े क्यूब में से 8 क्यूब काटे हैं. क्यूब्स वॉल्यूम इज, लेट सपोज ये ए क्यूब वॉल्यूम है, तो इससे आपने 8 स्मॉल ए क्यूब निकाल लिए. तो स्मॉल ए क्यूब आ जाएगा ए क्यूब डिवाइड बाय 8. तो इट इज 13824 डिवाइड बाय 8. तो 8 1 जा 8, देन इट इज 58, 8 7 जा 54, देन 24, 8 3 जा 21, सॉरी कितना बचा, 8 1 जा 8, then it is 50, 8 7 जा 56, 22, 8 2 जा 16. ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है भाई, बढ़िया वाला. इट्स अ परफेक्ट क्यूब नंबर. इट्स अ गुड परफेक्ट क्यूब नंबर 1728. इट्स अ 12 का क्यूब. इट्स अ 12 का क्यूब. The ratio of the surface area, the ratio of the surface area of the original cube to sum of the surface area of the three smaller cubes. Got it? What is the cube? What is the surface area of the cube? 6a square, if you remember. What is the ratio of the surface area of the original cube to the sum of the surface area of the three smaller cubes? ये किसका क्यूब है वैसे? क्या ये समझ में आ रहा है कि ये किसका क्यूब होगा? 20 का क्यूब होता है 8000, 30 का क्यूब होता है 27000. इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है. इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4. 4 का यूनिट डिजिट कब आता है? 4 का क्यूब 64. तो 20 से ऊपर, 30 से नीचे, 4 का यूनिट डिजिट 24. So this बड़ा वाला क्यूब is a 24 का क्यूब. So the side for this cube was 24. What is the surface area for it? 6 capital A square. 6 capital A square. Sum of surface area of 3 smaller. तो छोटे वालों के होंगे 6 A square, लेकिन ऐसे 3 रखने हैं तो into 3. Got it? बड़े वाले का 6 capital A square और छोटे वाले का, since you want 3 such small spheres, so एक का 6A square, 3 का this. Got it, got it, got it. 1 by 3 capital A by small a का whole square. Capital A is 24, small a is 12. So 2 ka square, 4 by 3 is the answer. It was a nice one. What do you say? It was a nice one. What do you say? एक बार दोबारा देख लेना पूरा. Just look the thought process completely once more once the video is over. एक बार दोबारा चला के देख लेना. So I think with this we are going to wind up this session. We have covered a lot of questions, and this is our first batch result of the first batch result of the CAT. Uh, we got some good results, a lot of 99 plus percentilers, maybe 22 of them or maybe more. And this is yeah, so that's it. Thank you very much. See you in the next session. Till then, take care of yourself. Do revise the session because directly 1 or 2 questions can be expected from here only. So do revise it as much as you want, and we will meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time. See you. Have a great time. See you.